श्रीमद् भागवतम. So Srimad Bhagavatam, 10th canto. We're reading 10th canto, Bhagavatam. राजलीला के बारे में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद About the Rasalila, Shukadeva Goswami Pad वर्णन करते जा is रहे describing ये भगवानोपि तारात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितम. भगवान शब्द देकर के यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद Shukadeva Goswami is telling here Bhagavan. फर्स्ट श्लोक ही बोलते जा रहे. First sloka, 29th chapter. पहले श्लोक अर्थात दिस श्लोक श्रीमद् भागवतम 10th canto 29th chapter 10th canto, 29th chapter, sloka number 1. ये तीन श्लोक के ऊपर हम कुछ व्याख्या कर रहे हैं. उसके अनेकों टीका आदि के द्वारा So by many commentaries, जा रहे हैं. we were saying, ये describing this verse. ओपी तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका दीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया उपासितम. Sorry. भगवान ने क्या कि Ay, वह शरद पूर्णिमा Bhagavan, he saw this autumn nights, the full moon nights in the autumn season. दर्शन किया. He saw that moon, full moon in the autumn season. शाम के समय पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो उदित होता है पूर्व दिशा में, In the evening time, when the full moon rises in the east, just after sunset, then the full moon rises in the east. उस समय So चंद्रमा at that moment, की इतने सौंदर्य माधुर्य the moon is so beautiful, so जिसको देख sweet. करके कृष्ण के हृदय में गोपियों की मुखमंडल की Seeing that, Krishna remembered the lotus face of the gopis, the round face of the gopis. इसलिए तो तृतीय नंबर श्लोक में भी कहते जा रहे हैं दृष्ट्वा In the verse 3 explains. द्वितीय नंबर श्लोक में कह रहे हैं क्या. Sorry, verse 2. तद उरुराज कुकुभ करैर मुख प्रच्चा विलंपतोरुणेन संतमयी. The moon then rose, anointing the face of the eastern horizon with the reddish hue of his comforting rays, and thus dispelling the pain of all who watched him rise. The moon was like a beloved husband who returns after a long absence and adorns the face of his beloved wife with red kumkum. Verse 3, chapter 29, 10th canto. Akhanda mandalam ramananavang navakumkumam arunanam vanam chatat komala govi ranjitam जगो कलं वामदिशा मनोहरम. बहुत सुंदर रूप में यहाँ पर वर्णन करते हैं. So here's being so well explained, because for it's been a few days that I have been discussing only one shloka टीकाकारों की according to the commentary. वक्तव्य जो है मैं बता रहा हूँ. ये स्वयं भगवान है. स्वयं भगवान ने क्या की. So what did Swayam Bhagavan do? रात्रि को देखा. He saw those nights. Which nights? न शरद पूर्णिमा रात्रि को देखा. Autumn season nights. उस शरद पूर्णिमा रात्रि को क्या देखा. What did he see in these autumn nights? ना पूर्ण चंद्रमा को दर्शन He saw the full moon. वो चंद्रमा कैसे थी. How was the
the moon. न तद उड़ुराज पूर्व करीर मुख प्रचा विलिम्पित उरुणेन संतमयी। न वो चंद्रमा इतने सुंदर था। The moon was so beautiful, gorgeous. राका चंद्रमा कहा जाता है। It's called Raka Chandrama, the special moon. शब्द की भी तात्पर्य समझना चाहिए। So you have to understand the meaning of Raka Chandrama. What is a Raka Chandrama? Special, one special kind of moon. बोले देखो राका चंद्रमा की पूर्णिमा जो होता है। So this Raka Chandrama Purnima has a speciality. This special full moon called Raka Chandrama चतुर्दशी उसमें लग जाता है। starts in the Chaturdashi. पूर्णिमा पूरा रहता है। And Purnima also continues completely. और प्रतिपदा भी उसमें And in the first day Pratipad also. कहा जाता है This Purnima is called Raka Chandrama. कहा जाता है। It lasts for 3 days, this full moon. समझ में आता है? Do you understand? Do you get it? जैसे कभी कभी Like also sometimes एकादशी जो होता है on the day of Ekadashi, दशमी में लग जाता है। दशमी में 1 मिनट लग गया। for maybe for 1 minute in the Dashami Titi, Ekadashi is coming. And also in the whole day of Ekadashi, द्वादशी में जाकर के पूर्ण होता है। then it becomes completely complete in Dwadasi. Sometimes this happens also. ठीक उसी प्रकार So in the same way, राका पूर्णिमा जो कहा जाता है, this Raka Purnima जिस पूर्णिमा is one kind of a चतुर्दशी की भी प्राप्त कर लेते हैं, full moon that also कर लेते हैं। touches the Chaturdashi, the 14th day of the moon पूर्णिमा की cycle. पूरा रहते हैं। In the Purnima also completely, and प्रतिपदा की कुछ स्पर्श कर लेते हैं। some a bit also of the first day, Pratipad. तो उसी प्रकार वो चंद्रमा So in the कैसे same way, राका चंद्रमा how is that पूर्णिमा moon? युक्त चंद्रमा जो पूर्णिमा रात्रि की जो चंद्रमा Raka Chandrama इतने उज्जवल था कैसे was so effulgent, so brilliant. तो माने Just वो like चंद्रमा जब उदित होने लगे, when that full moon rose, चंद्रमा इतने सुंदर that moon was so beautiful, and अपने लाल लाल आभा ऐसे there was like a आभा के द्वारा reddish hue मानो पूर्व दिशा को क्या कर दें, that was completely सुरंजित कर दिया। like illuminating or completely like coloring the east direction with that reddish color. अर्थात यहाँ पर भी करें, भगवान की संकल्प करते ही चंद्र देवी ने प्राची दिशा को मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी करकमलों से लालिमा को रोलिकेश्वर मल दी। जैसे बहुत दिनों के बाद अपने प्राण प्रियतमा पत्नी के पास आकर उससे प्रियतम पति से आनंदित करने के लिए ऐसा क्या हो, उस प्रकार चंद्र देवी ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रस्तुत संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप जो दिन में So Gurudev is reading from the 10th canto. सूर्य रश्मि के कारण बढ़ गया था, वह दूर कर दिया है। देखो चंद्रमा उदित होने से क्या होता है, So when the moon rises, what happens? सबको शीतल कर देते। Everything becomes so fresh. सूर्य उदित होकर क्या करते हैं, But when the sun rises, then the sun gives so much heat, isn't it? व्यस्त कर देते हैं, व्यस्त समझते हो, And makes everybody like busy and everybody becomes busy doing many things, like disturbed फिजिकल बॉडी, in the physical body. जैसे अभी गर्मी पड़ रही है, Like for example, now it's too hot, कितने कष्ट हो, so difficult even to sleep, even during the night.
है कि नहीं? पसीना निकलते रहते, We're sweating all the time. लू चलते हैं, विशेष करके ब्रज में हम This loo, like रात very में hot दिन में air. लू भी चलते हैं। Day and night in Braj, there's this loo, is like a very hot air. लू चलते रहना The loo, है special, some hot air, कि नहीं? isn't it? है? ना दिन में सो पाते हैं, ना रात में भी सो जाते हैं। So you are wet day and night, कहते हैं जिन लोग के कुछ लोग तो क्या बोले, and you जो cannot लोग sleep AC में properly, रहने not even वाले, not day, कोई during the night. Those who have AC, जिसके they can AC sleep, but those who air don't have conditioning AC, शरीर में ठीक नहीं होता है, or those who their bodies are not okay with the problem AC, बढ़ जाता है। they have even more problems. Like some people, they cannot stand so much the AC. तो कहने की यह Their body, so. तात्पर्य है, So शरत काल में in the autumn season, जो दिवाभाग में दिन में जो सूर्य के ये किरण होता even है, the rays of the वो sun during तीव्र the day, होता है। during the autumn season, they are quite ऐसे। strong also. किंतु देखो But रात्रि काल में during जो the night, चंद्रमा के these जो rays किरण of the जो आते moon हैं, that come और समस्त दिनों के जितने भी ताप जो है मानो removes all that कर लेते हैं। heat that we felt during the day. स्निग्धता, कोमलता, So much refreshness आकर के refreshment चित्त की comes, प्रसन्नता soothing, देता है। and makes the heart so तात्पर्य क्या है? pleased. What is the meaning? न कृष्ण दिवाभाग में कृष्ण के Krishna, साथ during the मिलन day, की जो गोपियों की जो उत्कंठा The gopis are feeling so much अर्थात ये eagerness to meet विरह Krishna during the day. और उग्र ताप They are उनको feeling मानो so much शैतान separation लगे। from him. समझ में आ रहे हैं? इस उदाहरण के द्वारा दे रहे हैं जिस प्रकार So just like दिवाभाग में दिन के समय during the day, सूर्य के किरण, विशेषकर शरत काल में सूर्य के किरण जो है the rays of the है, sun, बहुत especially also during the autumn season, तेज होता है। they are very strong, the rays of the sun during the day. तेज समझते हो? माने वेरी स्ट्रांग होता है। The rays of the sun is very strong. है? Do you understand what is stage strong? The rays of the sun are very strong. और रात्रि होने से अच्छा दिन छिप जाने के बाद But when night सूर्य comes, के केवल चंद्रमा की जब उदित होता then है, when the उस moon चंद्रमा rises, की किरण से by the rays of मानो that समस्त moon, दिवाभाग की जो ताप जो all है that heat that came during the day is destroyed by the soothing rays of the moon during the night. And so much refreshment comes, coolness comes, वो दिवाभाग की cooling. जो And ताप जो है मानो उसको प्रशमित the कर rays देते of the हैं, moon आनंदित कर cools देते हैं। all that heat that came from during the day, you forget even. हैं? इसी के उदाहरण ये दे It makes you रहे हैं, forget ये the heat of the दिन day. में कृष्ण के So साथ the gopis, मिलन स्वच्छंद कर नहीं पाते, स्वच्छंद during the नहीं day, होता। they cannot easily meet Krishna during the day. इसलिए गोपियां क्या करती हैं? कृष्ण मिलन के लिए मानो दिन में तड़पते रहती हैं। So they are suffering, eager for meet with Krishna during the whole day. यहाँ पर सूर्य के ताप के साथ किसके So उदाहरण the दे रहे हैं? heat of the sun is compared to the separation that the gopis feel हैं? of Krishna. You understand? Do you understand? विरह रूपी ताप होती है। So गोविंद साथ क्योंकि यहाँ पर दिवाभाग में सत्संग मिलन नहीं हो सकता। because they cannot meet him सामान्य freely during the मिलन day, होता है, they meet फिर just कहीं little कहीं bit. आकर के बाधा प्राप्त हो जाती then some obstacle comes. है। किंतु देखो गोपियां क्या करती हैं? इसलिए रात में जो है वो मिलन उनके स्वच्छंद होता है, चंद्रमा की भांति किरण आकर के मानो उनकी संतप्त But then the moon शरीर को जो during the है night अत्यंत आनंद प्रदान करता cools their body and makes है। them ये उदाहरण दे रहे हैं। pleases their body and make them happy. This is the example इसलिए given. ये कहते जाए तो उड़ुराज कुकुर करी, और मैंने कहा था पहले ये दृष्टवा And I told, है ना, दृष्टा करो विक्षरंतु मनश्चक्रे, कृष्ण के मन में क्या हुआ? Krishna felt in his mind, सुंदर he saw this beautiful scenario of the autumn season, this beautiful full moon of the autumn season. मुखमंडल की And then Krishna, उद्दीपना he हुई। remembered the face of the gopis.
यहाँ पर मनश्चक्रे के द्वारा So Manas Chakra, टीकाकार ने कह रहे हैं हमारे हृदय में जितने भी the commentary explains वासना आदि that जगते हैं all the desires that we have in our hearts, कहाँ पर होता है the मन के द्वारा source of our desires is our minds. मन ही पहले क्या करते हैं So our mind, first of all, will चिंतन कर लेते हैं start thinking about फिर something. मन से जाकर के वे Then बुद्धि, after the बुद्धि mind से मन, बुद्धि, comes to अहंकार, intelligence, चित्त में जाते हैं ये सूक्ष्म शरीर then जो to है, the ego, then to the heart, chitta. मन है So the mind is in our subtle body. We cannot see our minds. Can you see your mind? हम तो कहते हैं तुम्हारे मन कहाँ है Sometimes और you तुम say, कहाँ हो? where's your mind? Where are you? किंतु मन इतना But actually सूक्ष्म the है, mind उसको is so दिखाई नहीं subtle and you cannot see it. देता। इसलिए मन क्या क्या है मन के बारे में क्या कहा जाता है संकल्प विकल्प आत्मक मन What is the mind? Sankalpa, क्या Vikalpa. करूं क्या नहीं करूं What to do, what not to इससे do. जो विचार जो आते हैं उसको Always कहा जाते हैं मन। analyzing and thinking about it, मन what to do, सदा what not to सर्वदा do. क्या This is the अस्थिर mind. है, The चंचल mind है। is always चंचल restless. ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म गीता में भगवान अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण मेरा मन In the बड़ा Gita, चंचल Arjuna said to Krishna, Krishna, my mind is so restless. प्रमाथि बलवत दृढ़म दृढ़म इसकी कंट्रोल करना To control my mind is दुस्साध्य something very difficult to do. है यथा वायुरीव जिस प्रकार हवा Just like trying to कब की दिशा से catch the air प्रवाहित होता है, or control उसका the air. बोलना बहुत कठिन हो Like जाता if you try to foretell in which direction the wind will move. चलिए बादल आ जाएंगे यहाँ पर किंतु थोड़ी बाद में देखा हवा Like for example, you see some cloud coming some direction, but then suddenly ऐसे होता है ना the wind moves, change direction, and it won't rain where you thought बारिश it होने would. वाले हैं So it's lightning, lightning, almost raining. फिर चले जाए But then suddenly the cloud is moved by the wind and sent another place, goes in another direction. So मन जो है the same way, our mind is so restless. है वायुरीव सुदुष्करम To control it's harder than trying to control the wind. ये होते हैं अर्जुन के कार्य Arjuna said this in the Gita. अत्यंत जो है बलशाली है Very मन powerful. बलशाली। The mind is very powerful. हम कुछ करना चाहते हैं We want to try to do किंतु something, मन करना नहीं देना चाहते but our mind doesn't want to allow us. हैं? Doesn't allow us. इसलिए मन के बारे में क्या कहा गया न संकल्प विकल्प आत्मकेति मानो So the mind is always making संकल्प some होता है, फिर resolution. विकल्प होता है। Sankalpa, then करें कि Vikalpa. नहीं? Decide something and then again dissolution. Oh, I won't do that. भालो यही मन लो This is good, this is bad. This is good, this is bad. भालो मंद बस यही चलते हैं। Bhalo manda, and good and bad. bad. This is the mind. मन की स्थिरता करनी पड़ती Manda. यही मन Cannot control और the भी mind. जब सूक्ष्म जाते हैं मन And बुद्धि even subtle, बुद्धि more में आ subtle than जाता the है। mind is the बुद्धि के buddhi, कार्य विचार intelligence. करना। So the buddhi, intelligence is vichar, to discriminate. हम कहते हैं बुद्धि से विचार करो So like we say, think with your intelligence. You have to analyze, to discriminate, to consider. बुद्धि के कार्य क्या डिस्क्रिमिनेशन करना So the buddhi is doing consideration. ये करना अच्छा है कि ये करना अच्छा नहीं है To do this is good, to do this is not good. Like this. फिर आ जाए मन बुद्धि अहंकार आ जाता है The ahankar also विचार comes. करके आप कहते हैं अहंकार में आ जाते हैं अहंकार Ego. माने Like you have the ego Ego. also. Ego. ईगो आ Ahankar. जाता है यस आई हैव टू डू Yes, I have to do. बट आई विल नॉट डू Or I will not do. This is the ego. नेगेटिव और पॉजिटिव में आ जाता है जैसे मन Negative or positive, depending. ये अहंकार क्या करते हैं So the ahankara, what does it do? हमें The कार्य ego में प्रवृत्ति करा दी makes us do the activities. Conform. अहंकार This is the duty of ahankar. प्रवृत्ति करा दी Makes us perform the ये actions. प्रवृत्ति आदमी तो फिर उसको क्या करते हैं वो कार्य से कैसे करते हैं But if you do something or not, चित्त so it depends on all these interactions, and then comes the chitta, like the heart. जो है Depending on the samskara that you have from previous life, the impressions from previous lives करते रहते हैं that are संस्कार there,
कैसे करना है कैसे ना करना है। how to do, not to do अच्छे the things. संस्कार है, If I have good संस्कार samskara means impression impressions. है। वो संस्कार क्या करते हैं, So these हमें samskaras, they will कार्य में परिणत करा देते हैं। अच्छी कर्म हो बुरी also कर्म हो जो कुछ कहे, make us do good things or bad things depending on the ये सब impressions we have. विचार शास्त्र में दिया गया Shastra explains all this. है। तो मैंने जो कहा था, ये यहाँ पर जो कह रहे हैं विक्षरन्तु So this first मनश्चक्रे, verse, chapter 29, अर्थात विक्षरन्तु भगवान मनश्चक्रे। श्री कृष्ण ने क्या कि वो Bhagavan राका Shri Krishna, चंद्रमा को तो he देखा, saw the Raka राका पूर्णिमा Chandrama, को चंद्रमा को the देखा, full moon, that special full देख moon, करके that गोपियों called की Raka Chandrama. मुखमंडल की क्या हुआ, And he, उद्दीपना हुई। this was like a stimulation for him to remember उद्दीपना होने the के साथ उन्होंने किया कि round faces of the gopis. And उनके then साथ मिलने के लिए प्रबल इच्छा Krishna प्रकाश। felt so much desire to meet the gopis. इसलिए मैंने ये कहा था, He ये desired सारे them. इच्छा So आदि कहाँ से होते हैं, मन all करते the desires come from the mind. हैं। फिर मन आगे जाकर के धीरे धीरे सूक्ष्माति सूक्ष्म के चले जाते हैं, मन बुद्धि Then it अहंकार, goes even to a subtle, more subtle platform, like to the buddhi, intelligence, then to the जिसके ego, ahankar, then to the कहा chitta, जाता to the heart. है कार्य और कारण So the cause and effect एंड इफेक्ट, theory. कार्य कारण में आज परिणत हो है। ये करना उचित है कि करना उचित नहीं, It's proper to do this, पहली it's not मन- proper to मन do उसमें this. करते रहते हैं। So first of all, our mind, इसलिए करें मनश्चक्रे everything starts in the mind. सगुन भगवान So, अपने मन में विचार कर so in his mind also Bhagavan was thinking, what should I do? है, क्योंकि वह रात्रि जो अत्यंत सुशोभन था, Because that सुंदर light था, was very beautiful night. It was a very beautiful night. वो रात्रि कैसे था, न शरद उत्फुल्ल It was autumn night. कालीन First of all, ये it was autumn season night. मैंने कहा I told ये शरद काल में रात्रि जो अत्यंत जो है सुंदर होता है, the nights in the autumn, they're very nice. जो कि तेज Because during the day it's still very hot. of the sun is very, The rays of the sun are very strong. और दिन रात्रि में During the night, चंद्रमा के किरण जो है आकर के सुशीतल करा the rays of the moon come and cool और everything. दीपन भी क्या करें, शरद उत्फुल्ल मल्लिका, शरद काल में And also in the autumn season, फूल all the flowers of the autumn season, they automatically, all these flowers, they were blossoming, blooming, blossoming. माधवी मालती Like Madhavi, मल्लिका Malati, आदि इसमें तो पुष्प Malika, सब all these विकसित हो जाते हैं। flowers, they क्योंकि blossom. भगवान की जो संकल्प व इच्छा करने के साथ Because ही when Bhagavan साथ makes a decision, ही योग में क्या करते हैं, ये सारी immediately वस्तुएं Jogamaya अपने she'll arrange, आप प्रकाश कर देते she'll manifest everything which is necessary. Because he is Bhagavan. हैं। किसी का कहता है इच्छा शक्ति कहा जाता है। So this Icha Shakti, the इसलिए desire potency of उपनिषद में Lord. जो आता है, There's a shloka in the Upanishad. Ekwaham, I was one. हैं? I was one, Krishna saying. हाँ, पर उस दिन पढ़ा था, हैं? That day I was reading. एको अहम बहुश्याम, Ekwaham Bhavasham. हैं? I was one, then I manifested in many forms. है, मैं तो एक है, एक ही I am only one. तत्व विचार में एक एकमेवम अद्वितीयम, भगवान एक छोड़ के दूसरी वस्तु नहीं Bhagavan is only one without a second. है, एकमेव अद्वितीय है। द्वितीय वस्तु कोई है ही नहीं, एक ही There's no वस्तु है। second thing, only one thing. किंतु एक ही वस्तु होते हुए अपने अचिंत शक्ति के द्वारा But still, if he's Achinta Shakti, inconceivable potency, अनंत जो है he manifests unlimited forms. हैं, करते रहते हैं। इसी की कहा जाता है भगवान की जो शक्ति जो है, इसको So कहते हैं the potency of Lord अनंत शक्ति जो कहा is Achinta Shakti, inconceivable potency. अद्वैतवादी लोग इसी की The Advaitavadis, स्वीकार करना नहीं personalists, चाहते, they don't भगवान की accept शक्ति को, this. अनंत शक्ति को स्वीकार That God has an inconceivable potency, they don't want to accept that. इसलिए वहीं पर अचिंत अद्वैतवादी शंकर संप्रदाय के लोग क्या कहाँ तक So the people of Shankara Sampradaya, Advaitavadis, भगवान एक है, they think, okay, Bhagavan is only one. एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये तो ठीक है, बैरियो का एक छोड़ Okay, this is okay. वस्तु नहीं है, किंतु उसमें There's only one without a second, one God.
But he has unlimited potencies. Brahma is only one. कहते हैं राजा कहने से कितने राजा होता है? Like for example, if you say king, how many kings are there, right? Like that king देश के राजा है, is the king of this country, suppose. है? तो राजा कहने पर एक ही तो राजन होगा, देश के So कितने if you राजा say हो सकता है? he's a king of that country, there's only one king. There's not 2 or 4 kings of the same country, isn't it? हाँ समझो, यह व्यक्ति देश के राजा है, Or that person is the king of this समझ country. रहे हैं? तो वो व्यक्ति राजा एक होता है, The king is only one, है? किंतु उसके अनेकों परिकर रहता है, but he has many associates, like the ministers and अनेकों रहता है, many. है? हाँ समझो। फिर राजा कहने की साथ ही साथ And when you say और क्या king, चीज़ आ जाती है? also one more राजशक्ति idea is there. The king always has like राजा Raja उनके Shakti, कहने his के साथ ही साथ potency. उनके क्या रहता है? राजशक्ति। He has his power, the power of the king. यदि राजशक्ति यदि नहीं रहे, If you wouldn't have that, राजा नाम की विशेषता कोई मूल्य नहीं, then नहीं। there would be no speciality, no big deal in being a king if the king had no power. शक्तिमान के साथ ही साथ शक्ति की भी परिचय रहता है, So also, the Shaktiman, है? तो And also the राजशक्ति Shakti. क्या है? the power उदाहरण and के the समझिए चलिए। possessor of the जैसे उनके potency. अर्थकोश है, धन है, जन है, सैन्य है, For example, his money, his Eh? army, his ये सब रहता है weapons, कि नहीं? this is हाथी, the घोड़े, elephants, और horses, उनके हजारों जो अनुगत रहता है, His 1,000 अनुगत followers. अनुयायी, है, थाउजेंड फॉलोअर्स। this is the तब तो उसके राजा शब्द कहने के जल्दी भी कराए, potency एक of the राजा। king. राजा तो एक ही है, किंतु The king is only one. शक्ति है, But at the same time, he has this Eh? potency. नहीं तो राजा कहने से फायदा क्या हुआ? Otherwise, what is the benefit of being called a king? आया समझ में? किसके नाम Do you रख understand? दिया, उसके नाम राजा रख दिया। Okay, the name of like he's a king, फलाना suppose. व्यक्ति के Fulana person, राजा का है, Fulano, है? राजा like से राजू someone बोलते हैं, is like क्या बोलते हैं? king. Someone, maybe you call him Raju. किंतु उसके राज शक्ति यदि नहीं रहे, But if the person doesn't have the कोई potency धन of being a नहीं है, king, कुछ नहीं है, no money, तो राजा nothing, कहने के क्या फायदा है? then what is the benefit of calling him a केवल king? नाम मात्र हो जाता है। Just a name. किंतु राजा कहने के साथ ही साथ उनकी राज शक्ति रहता है। But when you call him Raja, like समझ king, में? he has always the potency of being a king, Raja Shakti. ये एक अहम, मैं तो एक हूँ, किंतु So मेरा I am अनंत one, शक्ति है, but I have unlimited एक में बहुत द्वितीयम। राजा potencies. तो एक है, दूसरी राजा नहीं है। So उस the देश में king is only one. Of a kingdom or a country, there's only one king for a एक ही country. राजा होते हैं, Only one. है? किंतु उसके अनंत राज शक्ति है। But he has उसी प्रकार unlimited potencies. भगवान कहने के साथ ही The साथ same way when you say ब्रह्म Bhagavan, ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति Brahma and Brahma Shakti always has a potency. है, ब्रह्म शक्ति रहता है उसमें। किंतु अद्वैतवादी लोग, But the इसके Dvaitavadis, शंकरपंथी लोग especially इस those शक्ति को जो है, who follow Shankaracharya, स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, they don't want to accept. है? शक्तिमान के स्वीकार करते हैं, किंतु शक्ति के स्वीकार नहीं कर सकते। Shakti, the potency. भगवान They के accept स्वीकार only, करो, ब्रह्म के स्वीकार करो। ब्रह्म शब्द मुख्य they accept only Shaktiman, like ब्रह्म शब्द की मुख्य Bhagavan, but not its potency, not his potency. Like the main meaning of Brahma is Bhagavan. क्योंकि भगवान की शक्ति को वो स्वीकार नहीं कर सकते। They accept Bhagavan, but not his potency. They want to steal the potency. Who? Like Ravan, for example. चाहते हैं। हम जब रामायण के यदि आध्यात्मिक रूप में भी विचार करके देखें, So if you analyze the Ramayana, रावण अद्वैतवादी है, Ravan is like Advaitavadi, monists, ये क्या करना a चाहते हैं? monist. शक्ति के जो सीता शक्ति को हरण करना चाहते हैं, और ब्रह्म मैंने ब्रह्म के शक्ति को स्वीकार करना चाहते हैं। They only accept, they want only the और potency ब्रह्म के- without और Brahma. अंत में ब्रह्म के स्वरूप को वो स्वीकार करना नहीं चाहते He doesn't want to accept the Swarupa of the Brahma, हैं। form of Lord or the Lord himself. को लिया जाए, He wants the potency separated from God. पर ब्रह्म है, Like Brahma. Ramachandra, he is भगवान Parabrahma. है।
He's Bhagavan. किंतु सीता देवी उनकी शक्ति है, But Sita Devi, He's Shakti, शक्ति को potency. स्वीकार करना नहीं चाहते। और वो ब्रह्म क्या है? निराकार निर्विशेष कहा जाता है। So they don't accept that, and they say, oh, Brahma is Nirakar Nirvishesh, without a form. अद्वैतवादी पंथी के ये विचार जो है, So this is the conception of Shankara Acharya and those who are in his line. This is not a proper conception. Anyway, coming back to what we were speaking about. संग भगवान ने क्या की? Swayam Bhagavan, He तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वृक्ष रंतु मनस चक्रे, मैं मन के द्वारा, भगवान इसलिए कहते हैं वह चंद्रमा को देख करके उनके मन में Bhagavan saw that full moon and he started क्या thinking विचार कर रहे हैं? what to do. He considered ये गोपियों के साथ मिलान के लिए है, to meet the gopis. वो चंद्रमा को देख करके गोपियों की मुखमंडल की उद्दीपना हुई। Because he saw the full moon, he remembered the gopis. एक वस्तु दूसरी वस्तु के देख करके हमें क्या उद्दीपना हुई? So when you see something, you remember something else, like Udipan, stimulations, makes like reminds you of something. स्टिमुलेट कर है? क्योंकि शास्त्रों के विचार के अनुसार, Because according to the conception of the Shastras, रस की विचार करते हुए कहते क्या क्या चार वस्तु इंग्रेडिएंट्स जो है, when there are 4 ingredients, एक है कहते हैं विभाव अनुभाव, like Vibhava, Anubhav, Satvika and Vyabhichari, if these 4 ingredients are there, और उद्दीपन कहा जाता है। फिर and Vibhava is subdivided into Alamban and Udipan. आलम्बन भी दो प्रकार की होता है, Alamban also, there are 2 एक kinds. आश्रय One is Ashraya Alamban and another Vishaya Alamban. और उद्दीपन जो उसके उद्दीप्त करते हैं, Uddipan, स्टिमुलेट कर, something that stimulates your heart. उसके उद्दीपन कहा जाता है। It's called Udipan. तो इसी प्रकार वह एक तो In this शरद way, काल था, the full moon was so beautiful, the autumn season और night. जिसमें शरदकालीन संध्या शाम के समय था, इतने It was just like evening after sunset, और अनेक प्रकार के and पुष्प also आदि so many kinds of flowers. विकसित हो। They were विशेष blossoming, करके यहाँ दे रहे क्या, especially शरद उत्फुल्ल मल्लिका, Malika, the Malika flower. यहाँ पर मल्लिका कहने पर केवल मल्लिका पुष्प नहीं, One say अनेक Malika, not प्रकार only के Malika, पुष्प आदि प्रकाशित। many other kinds of क्योंकि जहाँ flowers पर also. स्वयं भगवान की इच्छा हो रही है गोपियों के साथ मिलने के लिए, Because Bhagavan himself, he wanted to meet the gopis. तो प्रकृति देवी भी कृष्ण के So the nature belongs to Krishna, the nature, right? So knowing the desire of Krishna, प्रकृति देवी भी एक ही साथ में समस्त at the same time, जो पुष्प जो है, all the season of flowers, समस्त पुष्प के एक ही साथ में मानो विकसित कर दिया। and the nature manifests all the flowers. जो होता है, फूल जो होता है, Because some flowers, अलग-अलग ऋतु में they प्रकाशित होता है। appear in different seasons of the year, right? They कुछ blossom. होता है ग्रीष्म काल में होता है, Like some only in the summer, some in वर्षा में कुछ the होता है, ग्रीष्म rainy वर्षा, season. तो शीत बसंत है, 6 ऋतु है ना। There are 6 seasons. किंतु देखो कृष्ण की इच्छा होने के साथ ही साथ But just by Krishna's desire, वहीं पर उपस्थित हो जाते the हैं, 6 गोविंद की seasons, सेवा they के लिए। appear there to serve Govinda. है? समझे? Do you understand? है? जैसे महाराज उपस्थित होने पर, Just like when the king is present, महाराज उपस्थित होने पर उनके सारे अनुयायी व्यक्ति क्या हो जाता है? all his followers, they will अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। also be present there. है कि नहीं? Isn't it? है? ये विधान है, नियम है। गुरु आने के It's a rule, साथ उनके always. शिष्य अपने आप आ जाते Like also when the guru comes, his disciples also come. हैं। नहीं आया तो गुरु उसके डांटेंगे। And if disciples are not there, the guru will chastise them. Hey, why didn't you come to listen to my Harikatha? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? The guru will tell or not, will say this or आप not. क्यों नहीं सुनते हो? Why are you not listening to Harikatha? Like the guru will बात chastise. सही है कि नहीं? This is true or not? हैं? हैं? जो शिष्य नहीं है, आया नहीं, Those who are not आया, disciples,
Maybe they came and they went like without any commitment. They sometimes show up, बात ऐसा ही sometimes होता not. है। This is जब हम true. किसी को एक गुरु मानते हैं If you accept गुरु someone की as your कथा guru, सुनने के लिए हमें so उत्कंठित होता है, we'll जाना be पड़ता eager है। to listen to इच्छा that रहे Guru's अथवा इच्छा Harikatha, नहीं to that रहे, person Harikatha, and you have to go to listen to Hari's Katha, whether you have desire or not. You तो have to हमें go. उसमें जाना पड़ता है, नहीं तो You गुरु have हमें to go. डांटेंगे। Otherwise, the Guru will chastise you. ये साधारण उदाहरण होता है। It's a general मैं देखा example. I saw in the time of महाराज जी Gurudeva. पाठ कर रहे हैं, If Maharaj, Gurudev, Swaminarayan Goswami Maharaj, he was giving Harikatha, all his followers, they would come running from Vrindavan and from many other places. They would come running to listen to him. Have you seen that in the time of Gurudev? प्रवचन दे देते When Srila Gurudev was सब दूर कर आ जाते। giving class? हाँ, Yeah. ये नियम होता है। This is like a rule, or it is always like that. प्रवचन दे But रहे if हैं, someone is जाए, giving नहीं जाए, kata, अच्छा what, लगे, ना then लगे, someone it's not your सुने, guru, ना सुने, maybe you'll go, maybe not, maybe you listen, maybe not, maybe you like it, maybe not. नहीं पड़ता उसका। Like, not so much difference to you. क्यों वो जानते हैं तो मुझे डांटेंगे नहीं। Because you know that person will not chastise you if you don't Guru listen to डांटेंगे। him. But the Guru will chastise you if you don't show up. Guru will say, क्यों नहीं आया? hey, why didn't you come to the Harikatha? मेरे बात नहीं सुनो, कल से मठ से निकाल देंगे, चल जा। So from tomorrow on, you have to get out of this temple. गुरु कहेंगे नहीं कि कहेंगे, The Guru will say or not? हैं? गुरु मानता है तो गुरु के आदेश पालन करना पड़ता So है। you accept the person as the Guru, then you will follow his instructions. You have to follow his वो instructions. दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, Whether जिसको Diksha हम Guru, दीक्षा Shiksha गुरु, Guru. शिक्षा गुरु मानते हैं, If you तो उनकी accept someone as Diksha Guru, आदेश Shiksha हमें Guru, पालन करना पड़ता you है। must follow his जिसको instructions. जो नहीं मानते नहीं है, But if you don't follow उसे that क्या person कहा as जाता like है? Diksha Guru, Shiksha Guru, then what? No? ठीक उसी में उदाहरण दे रहे हैं स्वयं In the same way, भगवान Swayam Bhagavan, की इच्छा हो है he had क्या this करने के desire लिए? to do what? गोपियों के साथ मिलने के लिए। To meet the और उस gopis. समय जो है स्वयं प्रकृति क्या है? Then Prakriti, the nature, प्रकृति तो भगवान के अनुयायी है। ये भगवान कहते हैं ना, मैं आदक्षे न प्रकृति Prakriti is under the direction of God, like Krishna told in Bhagavad जगत भी Gita. परिवर्तते। हे अर्जुन, प्रकृति भी मेरा है अनुगत्य स्वीकार करते हैं। Arjuna, और even मेरे the nature also is आदेश under से my guidance. प्रकृति Whatever सारे I say, जो आदि the nature संपादन performs everything करती according है। to my instructions. ये तो माया दक्षे न मेरा अध्यक्षता अकॉर्डिंग माई गाइडेंस, According my guidance. मैं जैसे निर्देश देता हूँ प्रकृति उसी प्रकार सारे कार्य आदि करते रहते The nature does everything हैं। according to my माया guidance. दक्षे न मैं मेरे अध्यक्षता से है, माया दक्षे न प्रकृति सुवते स्वचराचरम। प्रकृति क्या है? सब कुछ वो व्यवस्था करते रहते हैं। Prakriti, the nature arranges everything. बोलना नहीं पड़ता है, You don't even need to tell her. इंगित मात्र से ही It just प्रकृति indicates, and then the सारे कार्य nature कर लेते हैं। will do जैसे गुरु everything. के इंगित मात्र से ही Just like only by the indication of Guru, it's enough his indication or just सत्शिष्य mentioning. अपने कार्य के क्या कर देते The हैं? bona fide संपादन disciple, करके बैठते हैं। he will do बोलना everything. नहीं पड़ता है। The Guru doesn't even need to say the words. जो सत्शिष्य होते That हैं, person who is a उत्तम bona करके fide शिष्य होता disciple, है, उत्तम गुरु के disciple, बोलना नहीं पड़ता है। the Guru does गुरु not के to tell भाव को him. जान करके Because he knows the bhav of the Guru, he वो क्या knows करते it. हैं? And then he गुरु will, की इच्छा को जान करके he knows the सारे desire कार्य of कर Guru, and he will do everything according to the desires of Guru. देते हैं। गुरु क्या चाहते हैं? What does Guru want? Does the Guru want? समझ में आ रहा है? Do you understand? इसी को कहा जाता है उत्तम कट के शिष्य कहा So जाता this is है। the Uttam Koti Shisha, the best मध्यम disciple, कट के Uttam शिष्य क्या disciple. है? But the Madhyam उसके disciple, उपदेश देने पर करता है वो। the Guru has to कनिष्ठ give आदि order के to him. कनिष्ठ जो है But the Kanishta उनके disciple, उपदेश कभी करे कभी नहीं करे। sometimes he follows the rules, sometimes not. हर समझे उसके ठेला दे करके करना पड़ता है। ठेला समझते हो? उसे पिटाई करके। Then you have to like beat him. कनिष्ठ जो होता है उसको ठेला दे करके, ठेला माने लाठी। So the Kanishta you have to beat like with a stick, like oh, it's just like oh, why didn't you do that? Why didn't you do that? But the Uttam Sevak, हृदय के जान करके कर लेते हैं, उसको बोलना नहीं पड़ता। he knows your heart and he will just serve. You don't need to tell him even. So what I want to say is that जो यहाँ पर इसलिए देखो, यहाँ पर इसे कहने के तात्पर्य है से सुखदेव गोस्वामी पाद ये So here, कथा को श्रवण कराने के Shukadeva Goswami, before को कथा श्रवण करने के telling पहले the जो Rasalila, शब्द प्रयोग किया he used वो some अत्यंत specific words. महत्वपूर्ण श्लोक That's है। a this verse वो क्या is श्लोक है? very भगवान शब्द देकर glorious.
Because he started the shloka saying Bhagavan. ये बताते जा रहे हैं। ये कहते हैं भगवान, वो कौन भगवान? स्वयं ब्रजनंदन कृष्ण। Which Bhagavan? Swayam Brajendranandan and Shri Krishna. So when you say Bhagavan, ब्रजनंदन कृष्ण के लिए ही सूचित कर रहे हैं। you are indicating, mentioning Bhagavan Shri Krishna himself. हाँ सुन, स्वयं भगवान के लिए इंडिकेट करे। कौन? ब्रजनंदन श्याम सुंदर, दूसरे के ही नहीं, वैकुंठाधिपति के लिए भी नहीं कर So they रहे। are not thinking Brajendranandan and Shamsuna belong to Vaikuntha or something else. No. द्वारकाधीश मथुराधीश के नहीं कर रहे हैं। Not to Mathuradish, Dwarkadish. This refers to whom? ब्रजनंदन। इसलिए गीता में Brajendranandan. So Bhagavatam says, कृष्णस्तु एत चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। एत च अंश कला, जितने भी आगे वर्णन किया गया, all these incarnations that were described in the Bhagavatam, कृष्ण के जितने भी अवतार आदि को वर्णन कर दिया। वर्णन करने के बाद कह रहे हैं ये कृष्ण जैसा भगवान है। अब बाकी कोई अंश कला की बात। after that we see that Krishna is Swayam Bhagavan and the other avatars there are some Amsha and Kala, some expansion or expansion of the expansion of Krishna Baladev. गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि करके जा रहे हैं। So कौन भगवान? Krishna is going to perform pastimes with gopis. भगवान के अनेक अर्थ But होता which है। Bhagavan भगवान came? की जो डेफिनेशन, जो कई डेफिनेशन कहा जाता है, There are many definitions of Bhagavan. समझ में आता है। भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले उसके भगवान कहते हैं। Bhagavan is someone who knows past, present and future. अनेक शब्द होता है। Many words can come into किंतु यहाँ the पर जो भागवत definition में of Bhagavan. श्लोक में जो पहली जो कह रहे हैं But this first verse in the Bhagavatam, the Rasa Leela, भगवान कहने के साथ ही साथ Bhagavan, and in this case, Bhagavan means Brajendranandan Shama Sundaram. समग्र ओइश्य बीर्ज जस श्री ज्ञान वैराग्य चैव सन भव इति गणा। इसमें सभी भगवत अवतार में तो रहता है। Actually, all the Bhagavat avatars are also there. No any Bhagavat avatar is more inferior. But the highest form of Krishna और संपूर्ण रूप से ही प्रकाशित है, manifests completely in Krishna. किसी भगवतार में आंशिक रूप में दिखाया जाता है, किंतु ब्रजनंदन श्याम सुंदर में So maybe you see some ये समस्त गुणावली क्या है? संपूर्ण रूप में in Brajendranandan Shama Sundaram, see all the qualities completely manifested. चार जो गुण जो है एक्स्ट्रा But yeah, कहा गया, maybe some of qualities it's called like extraordinary. श्याम सुंदर कृष्ण में So Brajendranandan Shama Sundaram वेणु Krishna. माधुर्य और रूप माधुर्य है। ये चार जो मधुरिमा जो है एकमात्र ब्रजनंदन श्याम सुंदर में सर्वतोर So these four sweetness, they are completely pure only in Brajendranandan Shama Sundar. विराजमान है, प्रकाशित है, एब्सोल्युटली मैनिफेस्टेड, Completely, absolutely manifested. क्वालिफिकेशन मैंने कहा, The four qualifications I told, मैनिफेस्टेड है, it's absolutely manifested. ऐश्वर्य वीर्य जस श्री ज्ञान वैराग्य से, ये तो अच्छा भगवान के गुण दिखा गया। जितने भी अवतार बोलिए उसमें भी है, So all the avatars, they also have this. जस श्री ज्ञान वैराग्य से दिखा जाता है। किंतु यदि कृष्ण में विचार, ये 6 गुणों के विचार करके देखा जाए, With Krishna analyze about these 6 conceptions, पूर्णतम रूप में, Krishna is complete, Purnatama. पूर्णाति पूर्णतम रूप में, और विशेष करके जो है ये 4 जो गुण जो बताए, Especially these 4 qualities that I mentioned, Rupa Madhurja, Lila Madhurja, वेणु माधुर्य, Vyama Madhurja and रूप माधुर्य पहले होता है, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य। So first Rupa Madhurja, then Lila Madhurja, Vyama Madhurja and Prema Madhurja. ये प्रेम माधुर्य जो है और वेणु माधुर्य, So Prema Madhurja and Vyama Madhurja and Rupa Madhurja, पूर्ण रूप में असमर्थ रूप में प्रकाशित है, it's in unexplainable form they have manifested. उनके समान भी कोई नहीं हो सकता, और संपूर्ण रूप में जहां तक हो सकता है No, वहां तक completely.
This is मेरे possible कहने in की Krishna. तात्पर्य What I है, want to say is that ये कृष्ण जब ये लीला करने के लिए जा रहे हैं, when Krishna was कृष्ण के going to मन में perform क्या this संकल्प आ pastime, गया? Krishna felt some ना मुझे गोपियों के साथ doubts. He thought, विलास करना है। I want to do pastimes with the gopis. ये करने के साथ ही साथ And when he said this, प्रकृति शक्ति immediately स्त्रीलिंग वाचक nature, Shakti, स्त्रीलिंग Prakriti, वाचक होता है, हैं? nature is feminine gender, the nature. तो प्रकृति के कार्य क्या है? What is the duty of भगवान की Prakriti? सेवा, पुरुष की सेवा Serve करना। Bhagavan, the man. स्त्री के कर्तव्य क्या होता The है? duty of women पुरुष की is सेवा करना। serve the man. यहाँ पर पुरुष कर्ण से अकेला पुरुष When कृष्ण, you say Purush here, means the only कृष्ण enjoyer की is सेवा के Krishna. लिए ही प्रकृति की ये दायित्व रहता है, उनके दायित्व है। समझ So the हम जड़ जगत के विचार नहीं responsibility to serve Purush is of the women. I'm अपराकृतिक not जगत telling about the spirit, the material world, but from about the spiritual world. So God said in the Bhagavad Gita, "Hey Arjun, listen. प्रकृति स्वते सचराचरम, जो कुछ चर अचर जो कुछ भी वस्तु स्थावर Whatever we see in this world, moving or ये moving, प्रकृति सृष्टि करते हैं, ठीक है, किंतु प्रकृति कैसे Prakriti सृष्टि करते created, हैं? nature created, but how? अध्यक्षेण, मेरे अध्यक्षता, मेरे आदेश, By my order, by my guidance. मुझको अपने की स्वतंत्रता नहीं है, मैं जैसे Nature is not independent. Whatever I say, then याद करना चाहिए। Prakriti, the nature does. You should memorize this verse because people they think everything like the material nature happens and everything happens on its own. All called. And they even give an example. You cannot say the man can create without a woman. They say just like the cow dung, after 2-4 days it goes, it often rots with so many insects and worms. So they give the example. देखो अद्वैतवादी मायावादी जो उदाहरण क्या है उसको आपको समझना चाहिए। So you must understand these examples they give. So if you keep the cow dung for 2-4 days, then what will happen? It will go off, right? और उसमें अनेकों कीड़ा कैसे उत्पन्न हो? And so many worms also come. कोई एक सड़ा गला आम भी रख दो। Or maybe somebody keeps some rotten mango also. अंदर में देखो कीड़ा कहाँ से आ गया? And the insects will come from where? किल 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 करते हैं ना कृमि की भांति। But they will come also. हैं? आप बताओ। ये उदाहरण देते हैं। So this example is giving. जो कहते हैं बोले ये तो कोई वहाँ पर कोई दुखा नहीं पड़ता। सृष्टि कैसे हो रहा है? So how can the creation take place? इसलिए प्रकृतिवादी लोग जो है, So the materialist people they say अपना अपने ही वो करते रहते, किंतु ये बात नहीं है। Prakriti nature do everything by itself. खंडित कर रहे हैं। But in the Gita Bhagavan tells against this. भगवान की इंगित से सब प्रकृति करता है। He says, oh, कई दिन जावत मैंने आपको सुना कहाँ तक आपके समझ में actually आया? Bhagavan is directing the nature. जो है So I don't know if you understood. There are many different kinds of bodies in this creation. संयोग से सृष्टि होगा ऐसे भी नहीं। You cannot say the creation only takes place from the relation of man and woman. भूत शरीर, Like for example, the demigod's body or ghost body. सूक्ष्म शरीर आदि को दिखाया जाता है। The subtle bodies you see. किंतु ये सब जब से के मन के द्वारा भी I mean, the subtle bodies that exist. Actually, there are many kinds of creations also with the mind. क्या क्या महाभारत में? Like in the Mahabharata, you see. अरे व्यासदेव के पिताजी के नाम पराशर ऋषि। The father of Vyasdeva is Parashara. देखो वो मत्स्यगंधा लड़की को, You know, when he met Matsagandha, Parashara, only by looking at her, she became pregnant. दृष्टि से, just by looking at her. गर्भ में शक्ति संचार कर, गर्भवती हो गई। He put the potency in her and she became pregnant. And then how Vyasadeva appeared and everything. जन्म दृष्टि से भी सृष्टि हो रहा है। So just by the creation can come only by looking. मैंने आपको सुनाया। So some days ago I told many stories, many kathas, many different days. ये समय समय की ऐसे होता है। That sometimes these things can happen, yes.
उस समय ऋषि मुनि की ऐसी शक्ति था, So that time the rishis and munis, दृष्टि they के have द्वारा that power सृष्टि कर दिया। देखो to create only with the look or glance. अनेक उसके तो ऐसा समझता जितने भी सृष्टि आदि होते जा रहे हैं ये सब प्रकृति कहा जाता है, उनको भी एक साथ छोड़ना पड़ा। But it's material. All these material, चलो हम these जिस कथा में examples फिर आ actually रहे कथा में घूम करके आ like जाए। material body. Anyway, I'm just coming. I don't need to go into that direction now. भगवान की इच्छा क्या हुई, मुझे गोपियों के साथ मिल, क्या बोलते हैं, So हाँ? एक्चुअली आज श्लोक जो है बड़े ये तीनों श्लोक के मिलाकर के मैं सारी टीका को बता रहा so I'm mixing three commentaries and explaining. about the three shlokas. I'm speaking about three shlokas. अच्छा 10th canto 29th chapter 29th chapter, first, second, and third ये shloka. तीनों श्लोक के मिला करके उसके बता रहे हैं ये भगवान जो राज करते जा रहे हैं व राज जो करने के प्रवृत्ति जो हो रहा है ये क्योंकि भगवान शब्द के द्वारा भगवान ये सूचित होते जा रहे हैं Here the word is saying Shri Bhagavan, क्योंकि भगवान पिताराति, भगवान भगवान ओपी Bhagavan Opi, रात्रि Taratri, शरद उत्फुल्ल मल्लिका Saradotupala Malika. उसके भगवान के हृदय में So in the heart of वो Bhagavan, रात्रि को देख करके कैसे he उद्दीपना saw हुई those autumn nights and he felt so much Uddipan stimulation. है? जो रात्रि कैसे था एक शरद How were those nights? Yeah, first of all, autumn season, शीतल so beautiful and स्निग्ध कमनीय रात्रि था। fragrant, cool nights, शरदकाल की रात्रि जो है वो refreshing nights. The night in the autumn season is सुंदर very होता है। और nice. जिससे कि चंद्रमा जब उदित होता है Especially देखने में the सुंदर होता है। full moon had just शरदकाल में दिन में arisen in the कभी-कभी sky. वर्षा भी आ जाता है। So during the day, sometimes in the autumn season, it rains. Sometimes it's cloudy. सामान्य रूप में वर्षा हो जाता है। फिर Sometimes it rains a little in the autumn सूर्य season. के किरण जो है अतीव जो है तीव्र होता है। But in the rays of the sun are very strong also sometimes. ऐसा किंतु जितने ही बादल होता है ना उसके बाद जो सूर्य के किरण तो वो उतना तेज होता है। But you know, if it's too much cloudy, also the rays of the sun are very strong. मेघ जब ढक जाता है When the clouds cover the sky, हो गया but इसके if there's some rain also, बाद जो सूर्य किरण आते हैं ना वो बहुत শরৎকালের পূর্ণ শশী বড়ই মধুর বটে তারাই যখন ঘিরে থাকে নীল আকাশের পটে। शरतकाल में जो चंद्रमा जो उदित होता है so the full moon in autumn वो season, इतने सुंदर होता है। so beautiful. शरतकाल में विशेष करके रात्रि काल में वर्षा नहीं Especially in the evening time in this autumn season, doesn't rain. It doesn't शरतकाल rain. में दिन में थोड़ा बहुत हो जाता है बादल Maybe भी during आ the day जाता it will rain a bit. है जैसे भादो और आश्विन इसके शरतकाल Bhadra and Asin is the autumn season. These 2 months, Bhadra and Asin, especially in the आश्विन महीने में जो है Asin वो month. चंद्रमा ये क्या बोले सूर्य दिन में जो सूर्य जो है So during the day there is the sun. हैं, The sunlight is there, but it's really strong. रात में चंद्रमा रात में ज्यादा बारिश नहीं होता है But during the night, it's very rare to rain in the autumn season. समझ में आता है। और उसमें रात्रि क्या होता है शरतकाल में आप देखना इसलिए तो यहाँ पर वर्णन हो रहे हैं। शरतकाल के जो है उतने सुंदर जो आकाश कैसे रात्रिकाल में आकाश निर्मल हो जाता है। So in the autumn season, शरतकाले during the night, बड़ी मधुर बटे the sky is very clear. नील आकाश बटे आकाश कैसे होता है नीला हो जाता है। शरतकालीन रात्रिकाल के जो So during the आकाश night, जो होता है, दिन के नहीं शरतकाल में during the night, in the autumn season, the sky is really clear and bluish. It's very beautiful. नील आकाशेर पटे ताराई जखन घेरे ताके नील आकाशेर पटे और इतने सुंदर थोड़ा तारे आदि भी दिखाई पड़ता रहता है। And you can see so many stars in the sky as well. जो लिख रहे हैं Like ये कोई कल्पना की नहीं this poet is writing, it's true, it's not imagination. बड़े मधुर बटे
তারাই যখন ঘিরে থাকে নীল আকাশের পটে, शरतकाल की महिमा। तो So this is the god भगवान of the autumn season. ये शरतकाल की जो कहते जा रहे हैं, और शरतकाल में क्या हुआ, भगवान की इच्छा के अनुसार समस्त ऋतुओं के पुष्प And also by भी desire of Lord, प्रस्फुटित हो गया। all the flowers from different reasons, from different seasons, they also blossom. वर्षा, शरद, हेमंत, शीत, Summer, छह ऋतुएं जो winter, मानो rainy season, भगवान की सेवा fall. के लिए ही क्या हो जाता है, उपस्थित हो जाते So हैं। all these flowers from different seasons, they are blossoming to serve जिस प्रकार Bhagavan. उदाहरण दिया, गुरु के सेवा के लिए सब शिष्य तत्पर हो जाते हैं, Just like, for example, है? all disciples, they want to serve the Guru, होता ही कि नहीं होता है? isn't it? है? सब शिष्य चाहते हैं मैं गुरुदेव के कैसे सेवा करूं। All disciples, they want to serve Gurudev, serve सभी Gurudev. शिष्य क्या करते हैं, वो दीक्षित All, हो और whether they have Diksha दीक्षा from the शिष्य हो Guru अथवा शिक्षा शिष्य or हो, Shiksha, वो क्या करते हैं, Diksha disciples or गुरुदेव की Shiksha सेवा के disciples, लिए, all of them, वो उत्कंठित हो जाते they are so eager to serve the Guru, हैं, है कि नहीं isn't it? है? जैसे हम लोग सभी तो मानो Like all of us, we took Diksha from Srila Gurudev Vamana Goswami Maharaj, and we consider Srila Narayana Goswami Maharaj as Shiksha Guru. नारायण गोस्वामी सेवा के लिए हम सब कदे एक So, साथ खड़े हो जाते थे। We were all standing up, like eager to serve Srila Narayana Goswami Maharaj Gurudeva, उस समय wasn't it? देखा I saw that time. है, जितने भी गुरुदेव के, जितने भी श्रील गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज के शिष्य जो है, All the disciples from Srila Vamana Goswami Maharaj, they सेवा के लिए खड़े हो जाते थे, were standing up, like they were और उसमें तो नारायण गोस्वामी के शिष्य ready and wanted to serve. They were very good servants from Narayana Goswami Maharaj. At that time, actually, there were maybe only one or two disciples of Srila Narayana Goswami Maharaj, because at the time Srila Narayana Goswami Maharaj, he was only giving Harinam sometimes, but not Diksha. मेरे कहने की तात्पर्य जो है, यहाँ पर ये उदाहरण दे Anyway, रहे so the हैं example I'm giving कि is that भगवान की इच्छा होने के साथ ही साथ प्रकृति भी when Bhagavan has some desire, immediately the उनकी nature, सेवा के लिए कैसे है तड़पते रहते nature itself is eager to serve हैं। सभी Bhagavan, so अपने-अपने eager. क्या बोले सेवा की जो वस्तु लेकर के खड़े हो गए। So everyone is standing up, holding some object to serve, like some serving object, something to serve Krishna. So you see, only one verse दूसरे से ही to discuss is so much bliss, or the one verse. These three first verses of the 29th chapter, they are completely related, correlated. दो नंबर तीन नंबर So श्लोक जो है Shloka number 1, 2, 3 of the 29th chapter, ना, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, they are related to each other. इसलिए मैं They, तीनों श्लोक के so that's why I am reading the three verses and their commentaries, बताने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। and I'm trying to explain the essence of their meanings. इसलिए करे शरद काल तो आ गया और Okay, so it was शरद काल autumn आने के साथ ही seasons, साथ प्रभु के it was सेवा के लिए fall. प्रकृति देवी So nature was एक so ही साथ में समस्त eager at the one ऋतुओं की time. भी अकड़ गया, सेवा में लगा दी और समस्त Nature ऋतु put के all the पुष्प, seasons to serve Krishna, फल आदि अपने आप गोविंद की सेवा में आ जाता है। and all the seasons serving Govinda with their fruits and flowers. सर्द उत्फुल्ल मल्लिका है, दीक्षरंतु मनश्चक्रे जोगमय उपाश्रितम। भगवान उसको देख करके क्या किया, So Bhagavan saw these autumn nights, and that decision he had, that और साथ ही that साथ desire भगवान he को had. करने के लिए भगवान और एक करें जोग माया उपासना। भगवान मानो like also one more thing, because Krishna is performing pastimes like a human being, so he took shelter of Jogamaya. भगवान जो लीला आदि करते हैं But this lila that Bhagavan is performing, वो जोग माया के द्वारा ही करते रहते हैं। actually he's performing everything with नाम Jogamaya. प्रकाशो सर्वस्व जोग माया समावृतम। गीता में भगवान कहते In the हैं Gita, मैं Bhagavan सबके says, निकट मैंने अपने स्वरूप के जो है प्रकाश नहीं करते I don't manifest my form in front of everyone. In the Gita we see, है, नाहं प्रकाशो सर्वस्व, मैं अपने सुंदर जो स्वरूप जो है सभी के निकट में प्रकाश नहीं करता। I don't manifest my form in front of everyone, Krishna समझ says. में? भक्त के निकट भगवान अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं But और अभक्त के Krishna निकट भगवान क्या करते हैं, अपने shows his स्वरूप form के in front क्या of the कर देते हैं? devotees, but in front of the non-devotees, संकुचित कर रहे हैं, दिखाते नहीं। Bhagavan hides his form. बात ही सत्य होता है, हैं? This is true.
हाँ सर, नहीं तो भगवान में भगवत्ता कहाँ रहेगा, सबके बराबर कर दे गया। Otherwise, if it would be same, भक्त में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं if रहेगा। there was no discrimination of Bhakta and Abhakta devotees or not, then how come Krishna would be Bhagavan really? मैं अपने समस्त That's स्वरूप why के Krishna समस्त says, के निकट में, I am not manifesting my form in वो front भी of भक्त के everyone. निकट जब मैं अपने स्वरूप के प्रकाश करता हूँ, जैसे जैसे भक्त होते हैं, And also, I will manifest my form according to the type of the devotee. भक्तों के निकट मैं वो स्वरूप को मैं प्रकाश करता हूँ। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद बृहद भगवतामृतम ग्रंथ में So, Sanatana Goswami, his Brihad Bhagavatamrita, विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। he explains the speciality of Bhakti and Bhagavan. So, according to the type of devotee, Bhagavan manifests a special form according to the devotee. जैसे भक्त होते हैं, According to the kind of the भगवान devotee, उस भक्त के निकट Bhagavan will manifest a form कोई 10 accordingly. भक्त होते हैं, कोई सबका भक्त Dasya Bhakta, Sakha कोई Bhakta वात्सल्य रस के devotee, भक्त होते हैं, कोई Vatsala माधुर्य रस के Bhakta, भक्त होते Madhurya Ras. हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद एक अभूत अपूर्व ग्रंथ के So प्रकाशित Sanatana किया। Goswami manifested an amazing, unprecedented book. इस It's called Brihad Bhagavatamrita. के ऊपर ही सारे आचार्य Actually, ये जो कि रूप the books गोस्वामी of पाद all है, of our acharyas, even इसके Rupa ऊपर ही Goswami's विचार book, करके they were written on the basis of the book Brihad इसलिए Bhagavatam. बृहद भागवत ऐसे एक So Brihad Bhagavatam is ग्रंथ a, है, like a सिद्धांत unique and unparalleled book full of Tata Siddhanta. शास्त्र के एक निपुण ग्रंथ कहा जाता है। इसके बार बार अध्ययन होनी चाहिए, बार बार So you should again and again. कितने बार This book, Gurudeva, so many times he has read this book and also taught us. यहाँ पर क्लास देते, He would give class here about this book. आज खत्म हो जाता था, फिर विरोध भागवतम, फिर विरोध भागवतम, 2 बार It would, he used to finish the study, then again start again. One more time, 2, 3 times. अतीव जो है Again and again, like so many times he रसायन चैप्टर कहा जाता है। read Brihad Bhagavatam and also especially one chapter of it called सारे भागवत के एक एक श्लोक के उन्होंने क्या की, Rasayana chapter. सभी को जो अपने So माधुर्य in रस that के द्वारा ही पुष्टि करके chapter, Sanatana Goswami quotes many verses of the Bhagavatam but actually being explained in Madhurya Ras. अंतिम चैप्टर में होता है, उसके कहा जाता है क्या, क्या चैप्टर कहा जाता है, So which that chapter? रसायन चैप्टर कहा जाता है। The Rasayana chapter. देखो 10 रस के श्लोक भी So in the sloka of Dasya Ras, there is such a beautiful description that you can see the meaning according to Madhurya Ras. Even a के द्वारा ही प्रकाशित sloka करते हैं। from Sakya Ras also can be explained according to Madhurya Ras. हाँ समझिए, जैसे थोड़ा सा मैं इंगित देता हूँ, I'll just give some small indication about this. ब्रह्म सुखानुवृत्तम दस्संगतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन सार्धं बेजहो कृतपूर्ण पुंजा। ये श्लोक सखर इसके श्लोक है। This is a verse actually from Sakya Ras. सनातन Tam Sata Brahma. का वर्णन किया ही But Sanatana Goswami, yes, he described this verse in Sakya Rasa also, but at the same time he also described it in Shringaras. नरदारकेन, इस शब्दों के द्वारा Naradara देखो Kena. सखर रस के श्लोक को क्या उन्होंने किया So कि actually this sloka from Sakya Rasa, he has भावों की जो है applied वो it व्यक्त to कर दिया। Madhurya Rasa explaining the bhava of the gopis. इसके पूर्व कोई आचार्य ने ऐसे So नहीं किया no acharya in the past had done like this. है। गुरुदेव इसकी व्याख्या करते थे, कितने सुंदर है। नरदारो के नो, नर शब्द की अर्थ है पुरुष, So Nara means purush, enjoyer, दार man. शब्द की अर्थ दे दिया Dara means स्त्री, woman. दार, Dara. नरदार के नर गोप, Nara, Dara, दार गोपियां, Gopa. Dara means gopis, feminine. इतने सुंदर सिंगारस की प्रकट So actually manifesting Shringaras very well, very nice. इत्थं सदां ब्रह्म सुखानुवृत्तं दत्सं गतरां परदैवते साधं विजुकृत पुण्य नरदार के न गोपियों की, एक गोपों की पत्नियां, गोपियां, So the wives of the Gopas, gopis, नरदार के न, नरदार के द्वारा के गोप पत्नी का so Naradara कैसे मिलित होते हैं। indicating the gopis, how the gopis they meet Krishna. मेरे कहने की तात्पर्य है, जिस सनातन गोस्वामी What I'm to say is that Sanatana Goswami, he wrote an unprecedented book full of Tata Siddhanta and Madhurya also. इसे गौड़ी और वैष्णव की सभी उसके चिरऋणी होते हैं। So all people, they are completely indebted to him.
हाँ समझे, इसलिए कहते हैं बृहद भागवतामृत के ऊपर बेसिस करके So on the basis of the Brihad Bhagavatamrita, रूप गोस्वामी पाद आदि जितने भी बड़े रसिक आचार्य हैं, Rupa Goswami and all the Rasika इसलिए Acharyas, महापुरुष तो कह रहे हैं, they wrote their books on the basis of Brihad Bhagavatamrita. गोस्वामी पद के प्रशंसा महापुरुष इतने किया, So Mahaprabhu has glorified so much Sanatana Goswami, so much glorified him. तत्व विचक्षण। He was expert in all the और tattvas. जितने भी महापुरुष सनातन गोस्वामी के प्रश्न करते हैं, दूसरे गोस्वामी के उतने नहीं, हम तो रूप गोस्वामी भी कहते हैं। So we always speak so much about Rupa Goswami, but if you really analyze, ये महापुरुष सनातन Mahaprabhu, गोस्वामी कितने he had प्रति रखते हैं। so much love and affection for Sanatana Goswami, so much love and affection for जिसके Sanatana प्रति Goswami. होता है उसके उतना ही शासन होता है। So if you have so much love and affection for someone, you chastise that person more. So if you don't love someone, so much someone, then you will not chastise him so much. So those who chastise means they actually love you. हाँ समझ में, हैं? कितना सुंदर। Like if you love someone, you will ये सब chastise that दिखाया person. So this is very थोड़ा beautiful. उदाहरण दे, सनातन से बाद में आ I'll गया। give one example about him. हैं? रूप गोस्वामी पाद तो महापुरुष के प्रिय पत्र ठीक है, हैं? Yes, Rupa Goswami, who is तो दूसरी the एंगल से हम विचार करते हैं। special recipient of किंतु Mahaprabhu's सनातन mercy. गोस्वामी Yes, विचार there's करो, another angle of analysis. But if you analyze in another way, सर्व दामोदर आदि समस्त उच्च कोटि के One भक्त day, के साथ बैठे हुए थे। Mahaprabhu, he was sitting महाप्रभु कहने with so लगे, many देखो, high-class यहाँ पर devotees. एक व्यक्ति है, Then Mahaprabhu said, there's one person here. ये क्या बोले शब्द, पर के भाव को नष्ट करना He wants to चाहते हैं। destroy my parakya bhav. हाँ, सभी भक्त सुनकर के वाह, All the devotees listened and heard this and were like, what? सब And there was no one outside there. Only the intimate devotees, they were there. Like Sarupa Damodar Rai, Ramananda, and Rupa Goswami also, Sanatana Goswami. मेरे प्रापार के भाव जो वस्तु के मैंने जगत में So this parakya bhav that I came to preach in this वो world, नष्ट करना चाहते हैं। one of you guys here wants to destroy my mood. महाप्रभु अकस्मात ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हैं? Mahaprabhu just suddenly started to say this and everybody was like surprised. वृंदावन और रम्मा काचिद उपासना ब्रजबधु वर्गण जा कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणमं प्रेम पुमार्तमा श्री चैतन्य महाप्रभु महत्वविदं तत्रादुरो न परः। श्रीमद् अमल पुराण श्रीमद् भागवत की So the spotless Purana Srimad Bhagavatam explains about प्रेम माधुर्य the parakya bhav of the gopis. सीधी बात है, किंतु परकीय भाव ही तो है। और महाप्रभु कहते हैं यहाँ पर एक Parakya बैठा bhav. हुआ है, And Mahaprabhu said, there is one of you here परकीय तू नष्ट करना चाहता है। that wants to destroy my parakya bhav. तो अकस्मात देखो महाप्रभु के हृदय के बाद एक ही सदा सर्वदा जानते थे, वो सर्व दामोदर। So only Sarupa Damodar knew what Mahaprabhu was talking about, तो no one else. चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी कहने लगे, Then Chaitanya Mahaprabhu, उंगली निध गए सनातन, he pointed out to him, Sanatan, you सनातन परकीय को नष्ट करना चाहते हैं। सभी भक्तों want to destroy my parakya. Then everybody was surprised, what? Sanatan. अरे सनातन चैतन्य महाप्रभु इसके पहले सनातन को सुन के अनेकों भूरी भूरी प्रशंसा की। Generally, Mahaprabhu glorifies Sanatan so much. Sanatan is such pandit, so scholar, so many things. Many times Mahaprabhu told many shlokas glorifying और वही Sanatan. महापुरुष सनातन से कहते हैं, महापुरुष स्वयं इस श्लोक में आ रहे हैं, स्वयं महापुरुष कहते हैं ये सनातन। But this time Mahaprabhu pointed out like this, Sanatan, Sanatan. He wants to destroy my parakya bhav. सभी भक्तों के All the devotees, they were कैसे संभव है? thinking, how is it possible? अभी सनातन गोस्वामी के तिरुभाव तिथि आ रहे हैं ना, मूढ़ पूर्णिमा। Just now the Mura Purnima is coming, the Guru Purnima, the appearance day, sorry, disappearance of Sanatana Goswami. So yes, Mahaprabhu said in front of everyone. किसी को अपमान करे, कुछ भी डांटे पड़े, घर में लाकर बोले तो दूसरी बात होता है। Like if you chastise someone, सबके सामने okay, हाथे में कहा जाता है ना, क्या but बोले? like in the private place, but like in front of everyone, chastise someone, even pointing out, हाड़ी भंग, it's like हाटे हाड़ी भंगा, माने सबके सामने अपमान करना, ये अत्यंत to humiliate or to dishonor someone in front of everyone is very like humiliating. Like if you come and say, tell me in private, oh Maharaj, जाति like, विषय होता है कि you did like if गलती तो you सबकी होता है। correct someone or chastising like in a private, it's okay, but in front of everyone, it's really like humiliating, isn't it? और वो महाप्रभु सबके सामने सर्वदामोदर Mahaprabhu in front of everyone, he pointed out बड़े-बड़े सब तत्व Sarupa Damodar, Ramananda, all those great devotees full of all the knowledge of the scriptures and Rasa, Siddhanta, everything. So Mahaprabhu even took the name of Sanatana, this Sanatan. He wants to destroy my parakya bhav. आहा,
Oh. अच्छा बताओ, इसे सनातन गोस्वामी क्या लगेगा? Then what Sanatana Goswami सनातन felt? नीचे सीधे हट गए। सनातन गोस्वामी समझ जाते हैं Actually, he कि understood मैं क्या परकिया को क्या नष्ट किया। how he was destroying the Parakya. He तो understood. उसके मतलब उस सभा में दो ही व्यक्ति समझते थे, एक है सरयू दामोदर, दूसरी Only one person understood. Two persons understood. Swarupa Damodara and Sanatana Goswami himself. The rest of the devotees, all of them, they were so surprised. महापुरुष सनातन को उसके बुरी बुरी प्रशंसा की। Because generally Mahaprabhu glorifies so much Sanatana all the time. पंडित विचक्षण, Because he was so much सनातन pandit विचार नहीं है, महापुरुष and he संघ knew so much about the scriptures. Mahaprabhu himself told. संबंध तत्वाचार्य, He was the Sambandha Tata Acharya. He, समस्त संबंध से जहाँ तो भक्ति में उड़ सकते हैं, संबंध नहीं हो तो अभिधेय प्रयोजन की कुछ मूल्य ही नहीं। so if there's no Sambandha, there's no value in Abhideya and Prayojan. संबंध This is true. तत्वाचार्य सनातन महाप्रभु बहुत जगह में प्रमाण। So Sanatana is the Sambandha Tata Acharya. It's so expert in all the Shastras. So by with many different words, Mahaprabhu has glorified so much Sanatana. But now, today, Mahaprabhu is just pointing out, like kind of humiliating him in front of everyone. सभी महाप्रभु की तरफ देखें। Then everyone is like staring Mahaprabhu. What? करके सनातन बोले, सनातन के क्या फर्क है? महाप्रभु ने कहा What? सनातन Then Mahaprabhu said, बताओ, तुम्हारे Sanatana, साथ तुम मुझे क्या समझते हो? what do you think about me? You are my guru. शिष्य के कर्तव्य क्या है? What is the duty of a disciple? गुरु सब कुछ समर्पित कर देना। The disciple has to give everything to the guru, offer everything. शरीर मन धन जो कुछ है गुरु में समर्पित कर देते, उसी को शिष्य कहा गया। So मेरे you surrender everything. प्रभु आर किछु नहीं, Nothing is mine, everything is yours. Hey Prabhu. Like in this Kirtan Bengali we see, जो कुछ भी है आपका जो whatever I have is actually yours. Hey Prabhu. Okay, very nice. समर्पित कर दिया ना। हाँ You have surrendered, yes. अच्छा, ये शरीर क्या है? Okay, but this body is तुम्हारा है? बोले नहीं, आप yours? हम लोग कहते हैं गुरुदेव, Oh, no, no. कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। even this body is not mine, it's yours. yours। Like we say, Gurudeva, everything is yours, but your lotus feet are mine. Gurudeva, everything is yours, but your lotus feet are mine. ये तो कपट होता है। This is like duplicity and hypocrisy actually. Sanatana Goswami said. बताओ, ये तुम शरीर को दिया? बोले हाँ। तो महाप्रभु ने कहा ये शरीर तो So you gave me your body, yes. So the body is mine. Mahaprabhu asked Sanatana. So your body is mine, yes. Then Mahaprabhu told Sanatana, so your body is not your wealth. Actually, your body is my wealth. Okay. So why do you want to destroy other people's wealth? If something is not yours, why do you want to destroy that? Why do you want to destroy it? Something which is not yours. ढंग से करना चाहते हो, अर्थात तुम्हारे शरीर नहीं है, ये शरीर मेरा है। Like this body is not yours, your body is mine because I have given it to me, right? Why do you want to destroy your body then, if you have given it to me? Then the devotees, they got even more surprised, like thinking, oh, Mahaprabhu, like what Sanatana did he do? Oh, what happened? Actually, when Mahaprabhu came, when Sanatana Goswami came to Puri to see Mahaprabhu in the Ratha Yatra, Sanatana, because he drank many different waters, he had some kind of skin disease that was like coming, like some pus out of the wounds. He didn't say anything, but he was thinking, I'm having this very terrible skin disease. Mahaprabhu is so merciful, seeing me. Probably he will embrace me, Mahaprabhu. And the divine body of Mahaprabhu is so beautiful, and my body is full of this skin disease and pus. I will contaminate Mahaprabhu's body because he wants to embrace me. And so Sanatana Goswami thought, better not come in front of Mahaprabhu, I will hide, and I have to have the darshan of Jagannath, yes, in the Ratha Yatra. So if you go to Jagannath Puri, and if you don't see Jagannath there, if you don't pull the chariots and the ropes, then what did you do there if you're not doing this? Yesterday someone said, this time nobody can go near the chariot, just those who are like a small group that the Supreme Court has decided can come near the chariot. So what can you do?
छत के ऊपर रख के You दर्शन can करो। go from the top of इस the पर भी बहुत कड़ी शासन भी कर top of the roofs, अनुशासन भी कर and you दिया। can see have darshan of the Jagannath from there. लेकिन बहुत लोग मर जाते गिर But जाते हैं। you know, the police, they try to control how many people go to the roofs, because so many people they fall, or maybe they fall down अपने चैतन्य मठ में चले जाएंगे। from the roofs. And छत के ऊपर थोड़ी कोई निकलता है हैं? दर्शन but we can go to the roof of the temple Chaitanya Mart there. बात समझिए। तो सनातन चलो हम तो कथ प्रसंग Anyway. आगे बढ़ाते हैं। Continuing the सनातन story, गोस्वामी पाद मन को विचार कर रहे हैं। Sanatana Goswami, his mind, he was thinking, जो है I'm having this skin disease जो है, उसके, now पर्स in my आदि body, लग- so much pus महाप्रभु के is शरीर coming. में लग जाएगा। I don't want this to शरीर touch जो the है, divine body of दुर्गंध Mahaprabhu. हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु के पास में नहीं जाऊंगा। All these bad things, skin disease will come to Mahaprabhu's body. So I won't see और Jagannath from जी के close. सामने I'll see him very महाप्रभु far. करेंगे। उस समय Mahaprabhu will dance in front of Jagannath. महाप्रभु के दर्शन करेंगे बस। So I'll just have the darshan of the beautiful Baba of Mahaprabhu. That's it. Then during the night, I'll give up my body in front of the under the chariot of Lord ये विचार Jagannath. करें। तो उसी के सर्वंतर्यामी सच्चिदानंद गौर हरि But चैतन्य Satyananda Gaurahari, he महाप्रभु knows जान लिया। everything, and he चैतन्य महापुरुष के knew what Sanatana Goswami was thinking. सनातन ये So that's शरीर why तुम्हारा नहीं, ये शरीर मेरा है। और सब मेरा Mahaprabhu है कि said, नहीं? Sanatana, your body is not mine, it's not yours, it's mine, it's Maya. Well, परकीय शब्द के so what is the meaning of Parakya? Para means someone else's. दूसरे के संपत्ति है, Kia, तुम like करना wealth. चाहते हो? So you want to destroy तुम्हारे इस शरीर को देखो। someone else's वृंदावन बिहारी wealth. की जय। महाप्रभु कितने सुंदर रथे। तब So महाप्रभु beautiful सुंदर explanation of बहुत Mahaprabhu. Then the devotees heard and they became very पहले तो भगवान pleased. सब डर गया। In the beginning, the devotees were really afraid, like surprised and afraid. से करना चाहते। Oh, Sanatana wants to destroy करे सनातन। जो सनातन को the Parakya of Mahaprabhu. तो ग्रंथ में But you see, परकीय तो Sanatana, भावों के इतने in the Brihad Bhagavatam, he has करके बताया। showed how Parakya is the highest mood. और वही महाप्रभु जब करने तो भक्त के तो साइड ही So in the beginning, उठ Mahaprabhu गया। बोले कैसे संभव? like confused the heart of the devotees, making them think that Sanatana wanted to destroy the Parakya Bhav. Anyway, I told the story, महाप्रभु but दंड दिया कि नहीं दिया? if Mahaprabhu chastised also Rupa Goswami or not, I don't remember. If you know, then you can tell me. महाप्रभु गोस्वामी पाद के शासन किया। If Mahaprabhu has also chastised Rupa Goswami or not, सनातन if के you जब remember. महाप्रभु कितने But Sanatana, yes, Mahaprabhu has chastised Sanatana so पूरे much. शासन करते हुए जिसके प्रति जितना So ही you chastise someone if you have a lot of ममत्व रहता है, affection for that person. उसके प्रति उतना ही है। इसलिए जैवत अपना ग्रंथ में भी कह रहे हैं। So in the Java Dharma also we see, इस जगत में जो जीव जो है ना बद्ध जीव पर अधिक होता है। actually God gives more mercy to the conditioned souls in this world. स्वर्ग आदि लोक में भगवान की Like those who are in Swarga Loka, they don't get so much mercy of Bhagavan. Also those jivas who are in Vaikuntha, also they don't get so much mercy if you think about it. जितने कृपा है इस मर्तवासी Actually those who live in this material world, they get so much mercy. Because the more fallen a person is, the more mercy the person will get. I forgot exactly it's one sloka of Bhaktivinoda Thakur. जितने पतित होता है The more fallen you are, उनकी then the mercy of Bhagavan will come more to you. अधिक होता है More. हैं? आज Do you understand? करुणा स्नेह ये सब निम्नगामी होता है। This love and affection, they goes for the lowers, those who are more low position. आदि ये सब क्या है? Mercy माने and नीचे के तरफ लोग जो होते हैं ना like the mercy and the love and affection, they go to those who are like स्नेह किसके ऊपर होता है? low, in the low position. Like for example, the mother loves the पिता बड़े son. हैं, पिता माता बड़े हैं Like parents are bigger than the son, than the children, right? So the love is coming from up to down. कई लेखक इस प्रकार लिखते हैं Someone has written this. आदि सब निम्नगामी Sneha, Karuna, affection and धारा के भांति mercy. जैसे निम्नगामी It's just like the water doesn't go up. The water, नदी आ रही है like the river is coming from the top of the mountain, streaming down, going downwards from the hill, right? A river, suppose. उदाहरण दिया जाता है So in the same way, the affection also moves in the same kind of direction, towards down. ये सब क्या निम्नगामी The affection, the mercy comes down, like from up इसलिए to भगवान down. इसे देखा गया So in this way, भगवान की कृपा कितने ये जितने बद्ध जीव के प्रति है उतने the love that God has towards the Bhaddajivas, the people of other worlds, they don't have this ये जीव same love. Bhaktivinoda Thakur explains in Java Dharma. Because the jivas, they have fallen down, so Bhagavan is giving so much mercy to them, and then Bhagavan is doing so much to try to free these jivas from Maya. इसलिए कर अनुग्रह भक्तानां मानुषं देवासुतं भजते तादृश पीड़ा
जासुत्वा तत्परो भवेत्, अनुग्रह करते थे। वैकुंठ में भगवान ऐसी लीला, चलो भगवान की इच्छा तो है, भगवान सर्वशक्तिमान है, Bhagavan is ये तो हम Sarvashaktiman. विचार करें। If you वैकुंठ really में think भगवान about लीला it, प्रकट कर देते, Bhagavan could also manifest his Rasa Leela in Vaikuntha with his associates, also in Ayodhya. He could also do that because people are also in Ayodhya, because everybody wants to see Rasa Leela. Everyone wants to see the Rasa Leela. Whether you're qualified or not, everybody wants to attain the highest thing, isn't it? Like, if your belly is not good, but still if you see Rasagula, you want to eat the Rasagula, even though maybe you cannot digest, but you want to eat the Rasagula. You have diabetes, you cannot eat sweets. But if you see a Rasagula, those who are sugar patient, they even have more eagerness to eat sweets. I don't want to sweet. I don't have sugar, diabetes, but I don't want to eat sugar. I don't have this desire. But those who have sugar, they have so much desire to eat sugar. You can ask them. But the doctors prohibit them to eat sugar. So but from fear, they don't eat. But sometimes hidden they eat. Like only one day. There's no problem to eat sugar one day. Then they eat, and then the sugar goes up, and then it's very bad for their health. This is true or not? So what I want to say is that the mercy of Bhagavan is so much on the people of this earth planets. You cannot even think about it. It's beyond of our thinking. This is beyond our thinking. So to give mercy to these living entities of this world, Bhagavan manifests this transcendental pastimes for Goloka Vrindavan in this material world, and he gives darshan to the living entities of this world and make them hear about these pastimes. And if you only absorb yourself in these pastimes, you will sing Bhagavan. That's why in Vaikuntha and Swarga, all these higher places, Krishna is not performing these leelas in front of them, of these persons from the higher planetary systems, these sweetness pastimes. So some devotees, like for example Narada Rishi, suppose, they give up the higher planets and they come to the earth to have darshan of these leelas and feel so much happiness in these pastimes. Because in Vaikuntha there is no Rasa Leela. Of course, if Krishna wanted, he could do, but he's not doing. Because Bhagavan, he can do everything, he could do. But we never heard that Bhagavan did the Rasa Leela in Vaikuntha to show to the devotees, or in Ayodhya or Dwarka. We never heard this. But Bhagavan is so merciful. Sanjay Vadaram explains, Bhagavan gives more mercy to those who are more fallen. And the kripa will give, the mercy will give the person who is more dear to you. First I told, so the Guru will chastise his dear disciples. That person who is not a dear disciple, the Guru will not chastise, because he knows if I chastise this person, he will run away. Guru has this power. Guru knows how much you can bend a bamboo stick. Right? If you bend it too much, then the bamboo stick will break. So in the same way, the Guru knows. Some people say, Guru Deva, you don't chastise me. They tell me sometimes. Then I say, then I speak. I tell you, if I tell you one or two words, tomorrow you don't even show your face again. So externally you're saying, Guru Deva, you chastise me sometime, Guru Deva, please chastise me. Yeah, but if I chastise you a little bit, if I tell one or two rude words with you, tomorrow you'll not even show your face here again. I know you won't show up anymore. Sometimes I tell. Now you're asking, oh Guru Deva, please chastise me, Guru Deva. But do you have tolerance to tolerate, power to tolerate this chastisement or not? Guru knows. But sometimes the Guru tests the disciple, and then the Guru sees that the actual disciple runs away after being chastised, and the disciple is like, oh, that Guru is not a bona fide Guru. He hasn't controlled his anger. This Guru doesn't have these 9 symptoms of bhava, because this Guru is telling me to do Vachuvegam, but he himself is feeling anger. So you see what the disciple is thinking, applying these things that
for himself applying to the Guru. And आरती करो। okay, thumbs up. Arrange for Arati. So the commentary of these three shlokas, Ashdar Goswami Pad and the commentaries, they explain such a beautiful way. What can I say? तब होता है। मैं तो बहुत कथा बोल दिया। I spoke many kathas here, many. भगवान की सेवा के लिए यहाँ पर जो है प्रकृति देवी। So how the nature itself, Prakriti Devi, is serving Bhagavan so much. भगवान ओपी शब्द एक श्लोक के हमारे OP. So each of this verse, each word of this verse, the acharyas explain. OP. What is the meaning of Bhagavan in this verse? OP. Each word, there's so much description about each word of this verse. How much more I can say? What I'm remembering, I'm just telling you what I'm remembering. समाप्त तो नहीं होगा। But it never ends. इतने सुंदर व्याख्या है। This explanation is so beautiful from these three verses. 1, 2 और 3 नंबर श्लोक। Number 1, 2 and 3 from the 29th chapter, 10th canto. Everything is actually indicated in these three first verses. Do you understand? So beautiful. और भी संस्कृत में बहुत है, कहाँ पर आत्मनेपद श्लोक हो गया, And sometimes in the Sanskrit is Atmanipad or Pasanipad. बहुत कुछ विचार है। Many conceptions according to the Sanskrit grammar about the conjugation of the verbs. Sanatana Goswami and our acharyas, they explain so much from these verses. In the 4th verse of the 29th canto, Nishama Gita Dananga Vardhanam Brajastriyo, तब तो आता है। then this verse is coming. Listening to the sound of the flute of Govinda, all these Braja Gopis, how did they became completely intoxicated by the love, by the prema, गोविंद की तरफ चलना। and they came running towards Govinda. ये समझ बहुत सुंदर। Such beautiful explanations. Benchakaptara Bosha. महाराज जी कहाँ गए? बोला Where is Maharaj? आज देर हो गई नहीं। Today is late, huh?